Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Am I supposed to speak in English or Hindi? English. First of all, I am very, very grateful to all those devotees from Jagannath Puri. I should tell you something about their background. These Jagannath devotees who are serving us, I am very much in touch with them. I used to go to, devotees know that I used to go to that defense camp. They used to have two camps, one time in April, May in Mayapur, and in Kartik they used to have in Govardhan. So these devotees are really, really committed devotees. Most of them are Jayapataka Maharaj's disciples. You should see their sincerity and commitments. Very, very focused and very sincere devotees. They used to start, I still remember this time when we went, I was there in Govardhan. Prabhuji, they started their Govardhan Parikrama in the morning at 5:30. I told them, I'm not going to walk with you. I'll just come in some of the station, give the class and go away. They started the morning Govardhan Parikrama at 5:30 and they ended their Govardhan Parikrama at 1:30 in the night. Correct? At 1:30 in the night. And the best part of it is, after completing 1:30 in the night, they are ready at 6 o'clock to be there for the next day's program. After walking for 21 kilometers. This is their commitment. Tremendously committed devotees. So these devotees, they used to always tell me, when are you coming to Jagannath Puri? So I always used to avoid that because I'll tell you everything because I don't have so much taste for Jagannath Puri. So I used to avoid it. So, but every time there was only one thing. I think Nilachal Prabhu used to tell me every time, Kab Jagannath Puri aa rahe ho, kab Jagannath Puri aa rahe ho. But I used to always avoid it. Jagannath Puri. And I'll be coming back from there and then I got the message and then came over here. Prabhuji, I can tell you very frankly, I am coming here only because these devotees have really prayed for me. Whenever they used to ask me that when are you coming, so I used to always tell them, मेरा तो कोई औकात नहीं है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो. So now when they have, I just told them very first thing itself, I told them, see, I have come here only by your blessings. And now you have to see to it that Jagannath should become completely focused in my life. I don't have so much taste of Jagannath. So I'll be very frank, Prabhu, I don't have so much taste. So, and they are very, very service oriented. Probably you will be shocked to know we had a Govardhan Puja in Govardhan. And in that Govardhan Puja, these devotees, there were something like 300 devotees, and they prepared more than 2,500 items. बराबर है 2,500 आइटम बनाए थे. कितने आइटम बनाया था? 1,030 items. 1,030 items है और प्रभु क्या क्वांटिटी था बाप रे. And everything is being prepared by these devotees. And there was one group was there, something like 6 or 7 groups were there, and each and every groups were preparing one item. One group was preparing only khatta item, one was chutney item, one was sweet, one was something. मेरे को दिखाने के लिए लेके गए थे. I was shocked, प्रभु. And there they used to say, ये ग्रुप ने 80 आइटम बनाया, ये ग्रुप ने 180 आइटम्स बनाया, डिफरेंट. और उसके अंदर भी जो है प्रभु जिसने सबसे मैक्सिमम डिफरेंट वेराइटीज के आइटम बनाया, उनको they had given awards and everything. And everybody was so enthusiastic. बाप रे, क्या enthusiasm था प्रभु. फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट्स प्रभु जी, फ्रूट्स जो है, अगर आपने वो गोवर्धन का मैंने वो फ्रूट्स का जो डेकोरेशन किया था ना प्रभु जी, I think the fruits might be not less than something like 400 to 500 kgs of fruits. You should, if you can have that photograph, ये लोग को दिखाएगा तो you will be shocked to see to it, प्रभु जी. You will be shocked to see.
And Jayapataka Maharaj, they wanted to see that Jayapataka Maharaj gives the class and everything. Now, Jayapataka Maharaj was in Mayapur. They did connection with Jayapataka Maharaj. He from Govardhan to Mayapur. And from Mayapur, Jayapataka Maharaj gave class to all the Govardhan devotees. I watching the Govardhan Arkut. I said, I was shocked to see ये लोग का क्या प्लानिंग और क्या सिस्टमेटिक बना और अरे क्या क्या प्लानिंग किया था प्रभु जी हर एक बच्चे के लिए जो है हर एक बच्चे को पूरा एंगेज करते थे हर एक बच्चे को जो है पूरी तरह से एंगेजमेंट करवाने का फिर बूढ़े लोगों के लिए एंगेजमेंट ये लोग के लिए एंगेजमेंट कितना वो लोग का सेक्शंस है इतना सो मेनी सेक्शन बच्चे का सेक्शन बड़े का सेक्शन बूढ़े लोगों का सेक्शन माता जी का सेक्शन अरे ड्रामा बाप रे क्या क्या ड्रामा किया आई वाज शॉक्ड टू सी मैं रात को हमारा रोज रात को 1-1:30 बजे तक मैं ड्रामा देखता था इनका और वेरी वेरी डिवोशनल ड्रामा प्रभु आई कैन टेल यू उस समय मैंने ड्रामा देखा है ना आई वाज वाचिंग एवरीबॉडी देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु वाज नॉट क्राइंग इन दैट ड्रामा beautiful drama and everything is done only by devotees and everybody were so committed that's why I always get very inspired by going over there I always tell them मैं इधर भी आऊंगा मैं आऊंगा आपके पास I get so much inspired by seeing that anyway so thank you very much प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आप लोग this is all these things Abhishek basically Abhishek Prabhu and Pavan Prabhu and all of them, I just gave them the telephone number and I told them that you can be in touch with them. They're just like our family members. They will go all out to help us out. And with proper devotion, absolutely devotion. Absolutely sincere devotion, they will be really working as well. So very much thankful for all of you. Very, very wonderful devotees. There is one boy will be coming now. Gopal करके एक लड़का है. He is medical कर रहा है ना किधर कर रहा है? क्या कर रहे हैं वो इज इन बैंक 9th अच्छा 9th स्टैंडर्ड में प्रभु आई मेक यू इंट्रोड्यूस सच अ वंडरफुल डिवोटी मैं हमेशा उसके साथ में बैठता रहता था इतना 9 साल का लड़का है लेकिन क्या डेप्थ है कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्या डेप्थ है एनीवे सो थैंक यू वेरी मच आई विल गो टू द Siddha Bakul प्रभु आई विल बी स्पीकिंग डायरेक्टली फ्रॉम माय हार्ट नाउ because you are all my family members. So I'll be very open to tell you very frankly, I'm not so much attached to Jagannath Puri. In my 35 years of my Krishna consciousness, I think this is 3rd or 4th time I have come to Jagannath Puri. Whenever I came only during Maharaj Yatra or once I came for Rath Yatra. But I don't have that taste of Jagannath. Basically, I am a Vrindavan man. And a Vrindavan se attached to that. So always I had a desire that when that time will come in my life, that I'll have some taste of Jagannath. Because I know one thing very clearly, Prabhu, that anybody who has got the mercy of Lord Jagannath, their spiritual life becomes very smooth. मैंने कितने devotees को देखा है. They have taken some commitment that I will do some commitment and by which my spiritual life becomes very smooth. And I will come every Rath Yatra. And I'm watching that devotee coming from last 20 years every Yatra because they have got so much inspiration by Lord Jagannath. I didn't have that. So I am come here only to get myself inspired. And when I came to know that Rajbihari Prabhu is there, so with that impression in my mind कि मेरा ये dryness है ना मेरे को खुला करो. मेरे को जगन्नाथ से ऐसा कुछ impression लेकर के जाना है. मैं घुटता रहूँ जगन्नाथ को अंदर. So that's why I came here. So my humble request to each and every devotee, please pray for me that I get somewhat attachment to Jagannath. I am not having a taste for it. Now, the only reason why I am a little bit attached to Jagannath Puri is Siddha Bakul. Siddha Bakul is the place where Haridas Thakur used to stay over there. And Lord Chaitanya Mahaprabhu requested him to stay in Siddha Bakul because being a Mohammedan Muslim coming from a Muslim family, Mahaprabhu didn't want to create any confusion or problems in Jagannath temple. So he told that you can stay over here and directly go on watching the
वो क्या है, वो ऊपर मंदिर के ऊपर क्या बोलते हैं, हाँ, ध्वजा को दर्शन करते रहो. दिस इज द वे यू कैन वर्शिप लॉर्ड जगन्नाथ. तो हरिदास ठाकुर वहां पे बकुल ट्री होता है ना, महाप्रभु ने एक बकुल का एक सीड डाला और पूरा ट्री बन गया है. एंड दैट इज द प्लेस हरिदास ठाकुर used to sit under the shelter of the tree and chant 192 rounds every day. So much so, Prabhuji, that place is so auspicious for us. In fact, I can tell you very frankly, Prabhuji, this is what my impressions is. As far as Krishna Lila is concerned, what do you say in Krishna Lila? Which is the best place as far as Krishna Lila is concerned? Then we say, out of the whole universe, India is the best. Earth is the best. From North India is the best. India is Braj Mandal is the best. From Braj Mandal, Govardhan is the best. And from Govardhan, Radhakund is the best. Correct? And Radhakund is the epitome for Krishna Lila. Somehow I get convinced with that way as far as Gaudiya is concerned. As far as Chaitanya Mahaprabhu's movement and the disciples of in Parampara of Gaudiya Sampradaya, for us, Siddha Bakul is like Radhakund as far as Gaudiya Sampradaya is concerned. Epitome. Why? Why it is so? See, Prabhu, let us be very frank. Radhanath Maharaj always used to say one thing, that for, just imagine, Prabhuji, I'll just take very clear. If Gaudiya Sampradaya is there and Gaudiya Sampradaya, Harinam is not been given preference, then what is the value of Gaudiya Sampradaya? Gaudiya Sampradaya minus Harinam, it has no value at all. In fact, that's why Prabhupada always used to say 99% of his spiritual advancement comes only in chanting through holy name. That means Harinam has so much importance. In fact, Radhanath Maharaj always used to say in most of the classes, in fact, one of the class he became so strong with Harinam. He said, all the preaching, whatever we are doing, if after preaching that person completely gets convinced also that, yeah, Krishna consciousness is everything, but even after knowing that Krishna consciousness is everything, that is not sufficient. The sufficient thing is, after knowing that Krishna consciousness is everything, that is the part of it. Afterwards, we go a little bit forward is, that person has to get the taste in chanting the holy name. If that person doesn't get the taste in chanting the holy name, preaching has no value. The essence of preaching is that person has to come to the center point, that he has to get a taste in chanting the holy name. The essence is chanting the holy name. And if you don't get the taste in chanting the holy name, Prabhu, I'll tell you something, Prabhu, spiritual life will be in a doldrum situation. There is one very nice lecture of Radhanath Swami. The topic of that lecture is begging Haridas Thakur. In fact, that lecture is one of the, I would say, if you wanted to, I can tell you with 100% guarantee, Prabhu, I have something like 3,000 lectures of Radhanath Swami. Out of that 3,000 lectures, as far as japa is concerned, or chanting is concerned, the best lecture is begging Haridas Thakur. And I can tell you with 100% conviction, if anybody who hears that lecture, immediately the japa will improve. In fact, when we used to have 64 rounds japa at my home, now we are online kar diya, like, and then we had offline. Every 2-3 months, we make it a point to see to it that we play that lecture when we used to take prasad, just to make it aware that Bangladesh, Belampur. You were there? But the Maharaj took to all brahmacharis to Balam. What is that place? Belapur. So there, that is the place where the prostitute tried to disturb Haridas Thakur. One of the best lecture. And in that lecture, there is one very heavy sentence Radhanath Maharaj has spoken, which is very shaking, which only a realized person can speak this type of a sentence. And what is the sentence he has spoken? Any problem in this material world, top to the bottom, any problem in this material, there is not a problem at all for any person if a person has got a taste in chanting the holy name. There is no problem at all. All the problem is only because of one reason, that is, he doesn't have a taste in chanting the holy name. Kya heavy statement hai?
from top to the bottom, any problem. All the thing is just you have a taste in chanting the holy name, everything is getting sorted out. That doesn't mean the problem will get solved, but most important thing is you will get so much shelter from chanting the holy name. You will get so much relief from chanting the holy name that even if the problems are there, you will don't feel it is a problem. This is the glory of chanting the holy name, Prabhu. A person should have that seriousness in his life that this is everything. This is everything. And that too, in a place like Siddha Bakul, where Haridas Thakur is chanting under the Siddha Bakul tree 192 rounds every day. Understand the vibration of that place, huh? Just understand. Plus, in addition to that, every day, Chaitanya Mahaprabhu used to come from Jagannath temple, take Mahaprasad of Jagannath, and used to come every day from Jagannath temple to meet Haridas Thakur at Siddha Bakul and give him the prasad. So every day Mahaprabhu used to come to Siddha Bakul. In addition to that, Rup Goswami and Sanatan Goswami, when they used to come, they have come to Jagannath Puri, they used to stay with Haridas Thakur. And they also used to be chanting in under Siddha Bakul itself. Just understand the value of as far as our Gaudiya is concerned. Prabhu chanting 192 rounds, and that too from a person to whom Mahaprabhu gives him the topmost position of Namacharya. That person is chanting under Siddha Bakul every day, and that 292 rounds. Can you imagine the vibration of that place? So deep vibration, and that too a Namacharya is going to chant. Has chanted. What of a consciousness? What of a seriousness? Bro, I'll give you some little bit insignificant my thinking. At my house, Prabhu, before our COVID, before that we used to have offline, means everybody used to come to my house to chant. On Sunday and Monday, we used to have 32 rounds program. And then once in a month, we used to chant 64 rounds, sometimes 128, sometimes 192. This type of programs were going on for years. Then afterwards, COVID came. So after the COVID, we started with online, and online became very famous. And so now we stopped doing offline because devotees are getting more association. But I can tell you one thing, very frankly, brother. So many devotees have chanted at my home in front of our altar. And many of the devotees were very, very sincere. Because that place has been chanted by so many devotees, I can tell you very frankly what is happening is, in that place, whosoever devotee comes and chants at that place, most of the people they used to come and tell me, Prabhu, idhar japa karne ka koi अलग ही वाइब्रेशन आता है, अलग ही वाइब्रेशन आता है, कुछ चेंज ही लगता है इधर. And I used to tell them, ये जो है ना, ये भक्त लोगों ने ये वाइब्रेशन बनाया है यहाँ पे, इसकी वजह से ये वाइब्रेशन आ गया है. In fact, even I can tell you about myself, Prabhu. I used to go most of the days to Radha Gopinath temple. But now after the COVID time, we couldn't go, and then the Zoom things happened. So many devotees are every day, almost 200 devotees every day sit in the Zoom to chant with us from Zoom. So because they chant with us, I used to also spend lots of time with them. But I can tell you very frankly, I don't feel separation of Radha Gopinath temple when I chant at my home in front of the altar. This is only because of one reason. The vibration of Harinam has made it so different. So I was always thinking one thing, like मेरा ये टक्कू बक्कू घर के अंदर इतने डिवोटीज ना करके पूरा वाइब्रेशन चेंज किया है, सिद्ध बकुल का तो क्या स्थिति होगा, सिद्ध बकुल का तो क्या स्थिति होगा, अगर सीरियसली लेगा तो क्या चेंज आता है. I still remember, Prabhu, we had a Yatra over here. We had our Jagannath Puri Yatra with Radhanath Swami was there. So somehow what I was doing is to go in the morning. I was not going to the Yatra places. I used to go to Siddha Bakul and chant. And then in the afternoon take prasad, take some rest, and then come for Maharaj program. And in the evening time, so many devotees wanted to talk with me because they used to come all over the world. People had come and they wanted to talk. So I used to spend full late night. I used to sit in the pandal and have some counseling with all of them. So in the morning, I don't go to with the Yatra people. I used to go to Siddha Bakul.
Now, I could understand how much Maharaj loves Siddha Bakul. The day our Yatra got over, the next day, when everything got over, and next day, uh, Maharaj was also going in the evening time or afternoon time or something. And as usual, I was going in the morning to stand in Siddha Bakul. And I was shocked to see Radhanath Maharaj came over there. Immediately when the Yatra got over in the night, next day in the morning, Maharaj was there in Siddha Bakul. And Maharaj came at Siddha Bakul and Maharaj was standing over there. I could understand how much Radhanath Maharaj also appreciates Siddha Bakul. Prabhu, we have to have one thinking very clear in our life. If we have no taste in the holy name, our life cannot be peaceful. I'll give you my hardcore realization, not realization, but I have seen it. In the last 35 years of my Krishna consciousness, I have not seen a single devotee, take my word, single devotee. I have not seen a single devotee in the last 35 years who has got a serious taste in chanting the holy name, has problem in his Krishna consciousness. He has ups and downs. He has problems and difficulties. But I have not seen that he went away from devotional life. Why? Because he has got a serious shelter in chanting the holy name. He's got a serious shelter. मैंने अभी तक एक भी ड्यूटी देखा नहीं. हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है प्रभु जी? लेट अस बी वेरी फ्रैंक, मोस्ट ऑफ देम आर हाउस होल्डर्स. हमने हरि नाम को प्रायोरिटी दिया नहीं है. और हमने हरि नाम का प्रायोरिटी नहीं देने की वजह से प्रभु, we are not getting the nectar of devotional life. Somehow I can tell you one very big challenge which I used to give to our Zoom devotees. In Zoom, many devotees, they come and I make a very, very open challenge. I used to give them a very open challenge. And I make them very clear also that if you come over here, because all over the world devotees are sitting to chant with us. So I make them very open offer. I make an open challenge to them that if you come and chant with us in the morning, in Brahma Muhurat time, in one session, in one sitting itself, you complete all your 16 rounds with trying to keep your thorough attention into it and thoroughly having that consciousness that I have no other shelter other than chanting the holy name. With that consciousness, and when the mind is running away, you bring it back, going away, bringing it back. Try to struggle with that mind for that japa session of that Brahma Muhurat time. And it should be consistently for 3 months. You should not miss a single day. And with this process, as the mind goes back, you bring it back. When it goes away, you bring it back. Goes away, you bring it back. But you are really struggling. And after 3 months, if there is no change in your consciousness, you feel like kya kuch maza hi nahi aata hai. Then Prabhu, I make them open challenge to them. Please don't come over here. Please don't come. That means this philosophy is wrong. Please don't come. But you will be shocked to know, Prabhu, after giving so many times this challenge, in last 1.5 to 2 years, not a single devotee came to me in front of me and said that, no, whatever you are saying is wrong. Nobody told me. This itself makes it so clear. It is so practical. Problem for us is we have not implemented. We have not taken it seriously. Prabhu, when you chant the holy name, yes, when scriptures also makes it so clear, there is no difference between Krishna and Krishna's holy name. But when we chant the holy name very seriously, what happens is all the qualities of Krishna, because there is no difference between Krishna and Krishna's holy name. So when you chant the holy name, all the qualities of Krishna starts coming in your consciousness. And when all the qualities slowly, it depends upon your contamination also. If the contamination is more, the qualities will be coming is less. But if the contamination is less, then qualities will be coming more. But एक चीज तो पक्का होता है, मैं हमेशा सबको बोलता रहता हूँ, हो सकता है तुम्हारे में बहुत कंटेमिनेशन है और वो इतना जल्दी असर नहीं करता है, लेकिन एक चीज तो मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, और सालों से मैं बोल रहा हूँ और मैं पक्का दावा के साथ में बोलता हूँ, हो सकता है
तुम हरि नाम लेने के बाद में भी तुम सुधर नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा कंटेमिनेशन इतना है कि तुम कचरा बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन एक गारंटी तो मैं दे सकता हूं, सुधर नहीं रहा है, लेकिन जब से तुमने जपा चालू किया तब से बिगड़ना बंद हो गया होगा, उतना पक्का है। उससे बिगड़ने का बंद हो गया होगा। जितनी कंटेमिनेशन है ना, उससे आगे नहीं जाएगा। हो सकता है वहां पे रह गया तो नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि भले हरि नाम में क्या पोटेंसी है प्रभु। सुबह में जपा करके जाओ प्रभु, सुबह में सिर्फ एक दिन भी जपा करके जाओ, दूसरे दिन जपा करे, रात को जपा करो, एक दिन सुबह में जपा करो। दोनों दिन देखो, दोनों बार माया का अटैक आएगा। और जिस दिन आपका जपा रात को हुआ है, उस दिन माया के अटैक के सामने तुम हिल जाओगे। और जिस दिन सुबह में जपा हुआ है फोकस के साथ में, जिस तरह से एक ही आसन, एक ही सिटिंग, माया के साथ में लड़ाई करके भाग फाइट मारना, उस हिसाब से कॉन्सियसनेस में जपा किया है, वो जपा और जिस दिन रात का जपा, दोनों का जपा के सामने देखो, और दोनों के सामने देखो, अरे कुछ दिन तो मेरा माया के सामने आई गॉट सकम, लेकिन आज वही चीज आई है मेरे सामने, मेरे को कोई असर नहीं हो रही है। क्यों? कृष्णा हृदय में आ गया है, कृष्णा हृदय में फिक्स हो गया है, इसलिए मैं हिल नहीं जाता हूं। कितना प्रैक्टिकल है प्रभु जी, कितना। अरे मैं तो बनिया हूं प्रभु जी, मैं गुज्जू आदमी हूं। थोड़ा खुला बोल दो क्या? प्रभु शुड आई स्पीक? प्रभु, आई एम बेसिकली बिजनेसमैन प्रभु। मैं बिजनेस एंगल से ही सब चीज देखता था, और मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। ये सब चीज देखता हूँ मैं, हरि नाम का असर ये है वो सब ठीक है। देखो अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को देखने का है, अपने हृदय में क्या परिवर्तन आता है। अपने को तो प्रैक्टिकल चाहिए। ये सब होता है वो लोग के लिए, मेरे लिए क्या है? मुझे तो मेरे में फर्क पड़ना चाहिए, तभी मैं सच्चा उसको समझूंगा, तभी मैं प्रैक्टिकल समझूंगा, तभी मैं सीरियसली दिखाऊंगा। So most of the devotees knows it, Prabhu. When I came to Krishna consciousness, before that I was already in the stock exchange. So because I'm in the stock exchange and then I came into Krishna consciousness, stock exchange and Krishna consciousness is absolutely opposite to each other, Prabhu. Absolutely opposite. Their money is raw material, money is finished product, and for money people can go to any extent. No ethics, no integrity, no conduct, no behavior, कुछ भी नहीं है। पैसा आया तो घूम जाएगा प्रभु जी। और यहाँ पे तो सेवक, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, सब चीज लेट गो, ये सब तो इधर कुछ नहीं है। So it was like a North Pole and a South Pole for me, Prabhu. And it was very difficult for me to keep my mental equilibrium. So I went to Jagannath Maharaj and I told Jagannath Maharaj, I'm leaving stock exchange. I cannot do it. I cannot manage it out. Both the things is not getting matched. So at that time, Maharaj gave me rather very serious instruction. He told me that I don't want you to not to go to stock exchange. I want you to be in stock exchange itself. I said, why? I'm an educated man, holding 9 degrees and a gold medal is there. Wherever I go, I'll get a job. But I don't want this type of a crazy. My Krishna consciousness is at the stake. At that time, Radhanath Maharaj told me, I wanted to show to the people that you can be in the stock exchange. At the same time, you can maintain the highest standard of Krishna consciousness. But I said, I'm not capable enough. Maharaj, don't have that type of expectation from me. I'm struggling. So then Maharaj gave me a very nice sentence. I am giving you a Guru Mantra. This is Maharaj's words. I am giving you one Guru Mantra. And if you follow this Guru Mantra very seriously in your life, this is Maharaj's words. I assure you, nothing will go wrong in the stock exchange with you. So then he said, Maharaj, tell me what I'm supposed to do. So then he told me that Maharaj ko malum tha stock exchange tower. I think मैंने दिखाया था, मालूम नहीं, but tower मालूम था. So he told me that before entering the stock exchange, every day when you go, 3 things you have to do it seriously. You have to chant your 16 rounds attentively, very focused, and then only you have to enter stock exchange tower. Before that, you don't have to enter stock exchange tower. First thing is that. Second thing, you should associate with a very, very sincere devotees, and specifically he mentioned me that you should associate more with the renounced order people. Why?
Because these renounced order people, they don't have anything material. They are fakir materially, yet they are so blissful. When you see that, so then you will understand. Then you go to their office, ये लोग सब रुपये के पीछे जा रहे हैं, कितना दुखी है, और मैं मंदिर में सुबह में जाके आया हूँ, वो लोग के पास कुछ भी नहीं है, कितना आनंद है। आनंद कहाँ है मेरे को समझ में आ गया, इधर नहीं है उधर है, लेकिन क्या करूँ, मेरा हाउस होल्ड लाइफ लिया तो इधर आना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत में आनंद उधर है। That conviction you should go on getting every day. And third thing he told me is, you have to see to it that you have to read Bhagavat or hear Bhagavat. Then he made me one concession. He gave me one more concession at that time. You are staying in Borivali, and Borivali and Dwada Gopinath is too far away. 1.5 to quarter to 2 hours it takes. As far as possible, you have to make it a point that you have to come as much as possible. But if at all some problem comes up and some difficulties comes up and you could not make it up, then you have to see to it that you regularly associate to the best you can with the renounced order people. And if at all you cannot do it in the morning time, Bhagavat reading or hearing, in the full day you should read and hear Bhagavat. But one thing is very clear. You should not enter the stock exchange tower till the time you don't complete your first 16 rounds attentively and focused. Prabhu, this instruction I got it in the year, I think 89 or 90, 1989 or 90. I took it very seriously in my life. I took it very seriously. मुझे मालूम, Mara told me, because Baba told me, I assure you. So मेरे को वहाँ के बस अभी ये मेरे ये आशा है. So Prabhu, this is almost 35 years now. 35 years. I am in Jagannath, Puri. So I'm speaking very boldly, but see to it that it is not so that I am something great, but I was very fearful of this stock exchange. So I took it very seriously. So in that 35 years, Prabhu, 35 years, I have gone to the stock exchange. Only 3 days I went to the stock exchange without completing my 16 rounds. I had never entered stock exchange tower. 3 days also, there is reason. One day, a fire took place at the stock exchange in my office itself. And that too, because of that, the 7 days the office, the full stock exchange was closed. And it was in my office. When my partner rang me up, I was chanting. He said, "Arey, idhar jaldi aa jao, puri aag lag gayi hai office ke andar." तभी मुझे लगा कि it is a fanatism if I say I wanted to chant my rounds. I said, "No, I'm coming." Then one day, some person specifically came from abroad just to meet me, and flight was late, and then he had to go. So because he had to go early, and he had to go, and because of me, he came to. I thought, I cannot tell him I'm chanting. I have to chant. ऐसा तीसरा दिन मेरे को याद नहीं, लेकिन 3 दिन मैंने मिस किया. Only 3 days I have missed. Not completing my 16 rounds. I did it after I came from the stock exchange. Now, most important thing is क्यों हुआ है? क्यों ये बता रहा हूं मैं आपको? प्रभु, I was working in a very, very big stockbroking firm, G.G. Shah and Company. We were 5th in Bombay Stock Exchange as far as clientele business is concerned. And I was a research analyst. I was working in capital market. I was doing all the research work. And I used to give an advice what to buy, what to sell. And people were dependable on me. क्या बोलते हो, क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए? And whatever I give advice, people used to buy and sell. Now, Prabhu, I can tell you, it's very contaminating. It's very contaminating. People are earning money because of your recommendation, and you don't do anything. That requires tremendous strength from within. If you don't have the strength, you definitely get carried away. Definitely get carried away. Prabhu, from last 35 years, I can say with 100% conviction, because now I can be very good. And I'm in Jagannath, Puri. So I'll be very clear with what I speak. In last 35 years, Prabhu, I have not done even one transaction of speculation in the stock exchange. Do you know what is the reason? मैं तो बनिया का बच्चा हूँ, रुपया दिखते तो गुलाट मारते हम लोग भाई. But that too also I'm coming from my father's. I left my whole father's property. So I always had a desire that I wanted to come to my father's level. Money wasn't so much burning desire to make it.
And I could see it. This fellow I have told him to buy, and he has bought it and he has sold it, and in front of me only, he has made lots of money. Sometimes they lose also. It is not so that every time they make money. So they have made money. And I could have definitely done it. There's nothing special. I can tell him, I can do it for myself. Prabhu, the only strength, the only support, the only full focus which I could get it is because I was not entering the stock exchange tower without completing my 16 rounds. That rounds was completely protecting me, Prabhu. It is like a kavach for me. वो कवच पहन करके मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाता था. प्रभु वहां तक मेरे को इतना लोगों ने वहां तक टेम्पटेशन दिया है कि people were earning lots of money and they were watching me that I am not doing anything. पार्टनर था उधर, I have been given a job, तो सबको एडवाइस देने का, तो I have to, it is my because their firm is their captive, so I have to just give them advice. पर वो लोग देखते थे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, so just to see to it that they can exploit me more or they can use me more. Probably people had come and told me an offer. They gave me an offer. Do you know what type of offer they gave me? They told me, साहब अभी आप पैसा नहीं कमाते तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कैसा कमाने का. आप एक काम करो, आप जैसा एडवाइस देते हो ऐसे ही एडवाइस देते रहना, बस कुछ भी करने का है. ये ऐसी लो नहीं, रिलायंस बेचो नहीं, ये जो भी करना वो आप बताते रहना. बस हम आप जो बोलेंगे वो हिसाब से हम खरीदेंगे और आप जो बोलेंगे उस हिसाब से बेचेंगे. करेक्ट. अभी उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा शेयर करेंगे, और अगर लॉस होगा तो हम पूरा लॉस हम बेयर करेंगे. आपका एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट में आधा आधा और लॉस में कुछ नहीं. प्रभु जी कहेंगे इमेजिन इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है. घर से एक पैसा देने का नहीं, प्रॉफिट ही घर पे आने वाला है, लॉस में कुछ नहीं जाने वाला है. प्रभु सो टेम्पटिंग ऑफर, सो टेम्पटिंग ऑफर, बट इट वॉज गैम्बलिंग. इट वॉज अगेंस्ट कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल्स, और वो करूंगा तो मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस चली जाएगी. कृष्णा को बता रहा है मैं इन एंड आउट सिंसियर होने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो टेस्ट नहीं आएगा. तो प्रभु हरि नाम has even allowed me to even not to accept that offer also. It was only Hari Naam. It was only Hari Naam. I can say 100%. मेरे को अरे भाई घुट बनिया का बच्चा होता है ना प्रभु, और उसको भी जो है अक्कल आती है रुपया कैसा कमाने का, वो भी सामने दिखता है और लोग कमाते हैं और हमारे वजह से ही कमाते हैं. तो इट इज so tempting, it easily you get carried away. I can tell you very frankly, Harinam is giving so much support. हाँ, तुम कवच पहनेगे ना, कवच पहनेगे तो हो सकता है प्रभु घायल हो जाओगे, कभी कभी बहुत भारे होता है तो घायल हो गए, लेकिन तुम मरोगे नहीं कवच की वजह से. उसी हिसाब से हरिनाम से क्या होता था प्रभु, हरिनाम में लेता था तो हरिनाम से क्या होता था, कभी कभी आई वॉज रियली गेटिंग टेम्पटेड, मेरा माइंड डिस्टर्ब होता था. अरे यार ये रिलायंस का बोला, रिलायंस में शाम को उसने भेज दिया, मेरे सामने 10 लाख लेके कमा गया, और मैं खाली बस हरी बोल करता था. क्या मैं मूर्ख हूं क्या? ये सब तो माइंड में चलता था प्रभु. लेकिन वापस भाग करके दूसरे दिन सुबह में जाता था ना, क्या मैं विचार कर रहा हूँ, इधर ये लोग फकीर लोग जो है इसके पास कुछ नहीं है, तो भी आनंद देते हैं, रुपया का विचार करके जा रहा हूँ. शर्म आनी चाहिए मुझे. ये जो नेक्टर है वो उधर नहीं है, सीधा ठंडा होकर के लेवल में आ जाता था. आई कुड अंडरस्टैंड, ये कवच मेरे को प्रोटेक्ट करता था प्रभु जी. दिस वाज टेकिंग केयर ऑफ मी. सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रभु टाइम हो गया, 7 बजे तक तो निकला. प्रभु आई शुड मैं प्रभु बोलूंगा आपको. I don't want to miss. I have come here only to talk, try to hear from Prabhuji, so I don't want to miss it. So we'll end it, Prabhuji. Sometimes I'll talk something. They have told me 2-3 classes. They have told me to give it. Every day. Prabhuji, I'll be speaking now. The next class, I think they have told me something like more than 1.5 hours. There I will speak about in a practical way by chanting the holy name. What life change you get it, what difference you get it by chanting the holy name in your life day to day. स्क्रिप्चर को साथ में रखेंगे हम,
but you will be. I have analyzed it. 8-10 points I prepared it. I will make you understand. Prabhu, holy name is everything. I can tell you, holy name is everything. For any person who has taken complete shelter of the holy name, I can tell you very clearly, Prabhu, spiritual life is very stable. हमारा प्रॉब्लम ही एक है प्रभु जी, हमने हरि नाम को प्रायोरिटी नहीं दिया है। सुबह में 2 माला, दोपहर में 4 माला, शाम को 6 माला, रात को सोते सोते बाकी की माला। प्रभु, ये हमारा प्रॉब्लम है। और इसके लिए जो है ना प्रभु जी, हमको जो है कृष्णा का असर नहीं होता है, कृष्णा की पोटेंसी नहीं आती है। When you give first effort, अरे वैसे भी 16 माला करनी है ना, तो क्यों ना सुबह में कर लेते हैं, खाली एडजस्टमेंट ही करना है ना। आई कैन टेल यू, सुबह में माला हो जाता है तो पूरा दिन रिलैक्स होता है। पर प्रभु, हमने प्रायोरिटी नहीं दिया है। और प्रायोरिटी अगर देंगे ना तो भी टेम्पटेशन आते हैं, तो हम टेम्पटेशन पे सक्कम हो जाते हैं। और माया ऐसी मारती है ना, कैसा करती है मालूम है? अभी 2 मिनट लेता हूँ, फिर बाद में बंद कर देता हूँ। तो माया कैसी मारती है पता है प्रभु जी? सुबह में जो है ना, अभी नक्की किया, अभी सुबह में जपा करके ही जाने वाला हूँ, तो दूसरे दिन जो है ना सुबह में 8 माला के बाद में ऐसा टेलीफोन कॉल आता है, और इतना टेम्पटिंग टेलीफोन आता है ना, वही होता है यार, थोड़ा छोड़ देता हूँ, 8 माला शाम को करूंगा। और उसी दिन क्या होता है मालूम है? रात को जब 8 माला करते हो ना प्रभु, तो ऐसा माया आपको बताती ना, देखो पहले सुबह के टाइम पे कितना टेंशन था, कितनी एंजाइटी थी, आज कुछ भी टेंशन है, कितना रिलैक्स होकर के माला कर सकता है। क्यों ना तुम अभी रात को माला करें, तो जरा भी टेंशन नहीं लेना, कहते सिस्टम कॉन्सियसनेस अच्छी होगी। और तुमको भी ऐसा लगेगा, सुबह में कितना घाई में हरे कृष्णा करता था, घड़ी देखता रहता था, और ऐसा करके 16 माला करता था, कितना रिलैक्स हो जाता हूँ। और फिर थोड़ा थोड़ा होने के बाद में क्या होता है मालूम है? वो है ना, फिर वो आदत लगती है। फिर बाद में माया दूसरा ट्रक क्या करती है मालूम है? सुबह में 4 माला ही होती है, बाद में सीधा टेलीफोन कॉल आता है। फिर वैसे भी 8 माला शाम को करता हूँ, 12 माला करने में क्या बांधा है? 12 माला रात को करूँगा। फिर बाद में थोड़े समय के बाद में क्या होता है मालूम है? चालू किया तभी माला टेलीफोन आता है, सब माला रात को करूंगा। और फिर क्या होता है प्रभु जी, सॉरी जगन्नाथपुरी में हूँ, इसलिए मैं बहुत हैवी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोल रहा हूँ। हर एक डिवोटी के थ्रू में, हर एक डिवोटी के लाइफ में हुआ है कि नहीं हुआ है? शर्म नहीं लेना है, देखो जगन्नाथपुरी में बैठे हो, खुला तो। अभी क्या होता है मालूम है? उससे आगे क्या होता है मालूम है? उसके बाद में क्या होता है? रात को जो है 16 माला करने बैठते हैं, और एक बार थका रहते हैं, एकदम थके रहते हैं, तो भी आकर के बैठेंगे, बराबर कड़क रहेगा कि 16 माला करना, 16 माला करना। सिंसियर डिवोटी है, ऐसा नहीं है, सिंसियर डिवोटी 16 माला करना, लेकिन पूरा दिन का थकावट है ना, तो दिल जल जाते हैं, वापिस उठ जाते हैं, वापिस माला करने बैठते हैं। लेकिन कभी कभी फिर थोड़े समय के बाद में जो है ना प्रभु, वो ढलने का रेगुलर होने लगता है ना, तो कभी कभी ढल करके सो ही जाते हैं। सो जाने के बाद में 2 बजे रात को उठ जाते हैं, ओ माला अरे 8 माला बाकी है, कोई देखता नहीं है, रात को 2 बजे माला चालू करते हैं, 8 माला सिंसियरिटी दिखाते हैं, 8 माला रात को 2 बजे करते हैं, और फिर 3 बजे वापस सो जाते हैं। फिर बाद में दूसरे समय माया क्या मारती है पता है? कि सो जाते हो, माला नहीं हुई और सो जाते हो, और फिर रात को उठते नहीं हो, सीधा सुबह में ही उठते हो, सीधा सुबह में उठ जाते हो। और जब भी सुबह में उठते हो तो तब देखते हैं काउंटिंग में, बाप रे, ये माला तो मेरा 8 माला कल था, और 8 माला मैंने कल का किया ही नहीं है, कल का 8 माला नहीं किया। तो सिंसियर है, तो क्या करते हैं मालूम है? ठीक है, आज मैं जो है 16 माला करूंगा, और आज का भी कल का भी 8 माला करके खत्म करूंगा, 24 माला करके जाऊंगा। अभी वो 24 माला थोड़ा चलेगा, फिर बाद में क्या होता है प्रभु जी, वो जो है ना रात को जैसे माला करने बैठे ऐसे ही सो जाते, तो पूरा 16 माला या उससे नहीं रहता है। और फिर बोला जाएगा कि 32 माला करने का है, कल का और आज का टाइम का शेड्यूल ही नहीं पकता है, क्योंकि ये रविवार को है ना, रविवार को छुट्टी का दिन है ना, उस दिन कवर कर लूंगा। रविवार के दिन दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उतना होता नहीं। पहले थोड़े दिन 2-3 रविवार अच्छा भी जाएगा, लेकिन माया फिर बाद में मारेगी आपको। फिर बाद में कैसे मारेगी मालूम है? वो रविवार के दिन भी कुछ दूसरा कोई फेस्टिवल या कोई डिवोटी मिलने आया, कोई गेस्ट मिलने आया, वो रविवार के दिन भी नहीं हो सकता है। प्रभु, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई एम इन जगन्नाथपुरी, devotees used to come and tell me 256 क्या 256? 256 chanting is outstanding, यात्रा में कवर करके जाने वाला हूं, रोज 64 करते जाऊंगा, रोज 64 करते जाऊंगा, और यात्रा के अंदर पूरा कवर कर दूंगा। प्रभु, डोंट लाफ प्रभु, वी आर ऑल्सो, हमारा ऐसा ही हुआ है, इसलिए तो टेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए तो लोचा हो रहा है। हमने जो है हरि नाम को प्राधान्य नहीं दिया है। प्रभुपाद ने जो है ना हमको ऐसा नहीं बोला था
कि जो है आपको 16 राउंड्स करने। आप देखो प्रभु जी, हमेशा प्रभुपाद जी जो है ना, जब भी दीक्षा देते थे ना, तो प्रभुपाद बोलते थे, आप जो भी वो बोलते थे ना, व्हाट वाउस यू आर टेकिंग दिस एंड चार्टिंग 16 राउंड्स, तो प्रभु जी हमेशा बोलते मिनिमम 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स, इट इज मिनिमम। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर जो है ना, शुरुआत में जो है ना, सबको जो है ना प्रभु दीक्षा वो लोग ही देते थे जो लोग 64 वाला रोज करते थे। और प्रभुपाद जी ने भी शुरू किया था ऐसा, लेकिन वो देखा कि उन लोग का स्टैंडर्ड नहीं है, उन्होंने 32 आया तो 32 में भी नहीं कर पाया। 16 उसके लिए दिया गया है जिससे हम सेवा में बराबर रहे, लेकिन बस 16 में भी जो गड़बड़ चालू कर देंगे ना प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, माया का प्रभाव इतना है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी बंद करना है, लेकिन एक वाक्य बोल के जाता हूं, सबको घुमा घुमा दे। हर एक व्यक्ति चेक करो, हर एक व्यक्ति चेक करो, पूरा दिन का बैलेंस शीट निकालो, पूरा दिन का ही है, सुबह से रात तक का, सुबह से रात तक का बैलेंस शीट आपका निकालो, आप चेक करो और पूछो पूरे दिन में आपने कितने समय अनर्थ के साथ में फाइट मारा है और कितने समय आपने कृष्णा का विचार किया। किसी को बोलने के हाथ ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, चेक करो। आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा मैक्सिमम टाइम आपने अनर्थ के साथ में फाइट मारने नहीं गया है, कृष्णा का तो बहुत लंबा है। डू यू एग्री और नॉट? एग्री तो हो गया कि नहीं भाई? अभी ये स्थिति के अंदर भी तुमने अगर जपा को प्रायोरिटी नहीं दिया, प्रभु व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट यार? कलयुग का प्रोडक्ट है, इतना कंटेमिनेशन है, अपना भी इतनी डीप कंडीशनिंग है, और बाहर की हवा इतनी भयानक है, और हमारा को भी जो है उधर से ही अट्रैक्शन जा रहा है। उसके अंदर अगर हमने हरि नाम को शेल्टर नहीं लिया प्रभु जी वी हैव नो होप, टेक माय वर्ड्स, नो होप। पर फिर बाद में क्या होता है, धीरे 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 टेस्ट कम होने लगता है, और जैसा टेस्ट कम होने लगता है ना प्रभु, आपका प्रॉब्लम ये होने लगता है, आपको तो मजा नहीं आ रहा है। अरे मजा कैसे आएगा? मेरे को एक राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर बोला था। मैं एक बार महाराज को बोला, महाराज मेरे को ऐसा गड़बड़ लगता है कि मैं डिवोशनल सर्विस करता हूँ, लेकिन डिवोशनल सर्विस के अंदर एक बार मोनोटोनस नहीं हो जाएगा? रोज जाने का, माला करने का, आरती करने का, भक्तों को मिलने का, घर पे जाने का, रोज करने का, चले तो रोज का मोनोटोनस नहीं हो जाएगा? और वो मोनोटोनस हो गया तो फिर मेरे को लाइफ के अंदर चार्मनेस चला जाएगा। हाउ टू सी टू दैट मोनोटोनसनेस डजंट कम अप इन माय लाइफ? यू नो व्हाट महाराज सेड? उन्होंने एक वाक्य बहुत सुंदर बोला है, व्हाट यू गिव इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट इज व्हाट यू गेट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। गुड़ी गुड़ी बिजनेस नहीं है प्रभु, यहाँ पे सिर झुकाना पड़ता है। हमारे गुजराती में एक नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता, मालूम है नरसिंह मेहता? नरसिंह मेहता ने एक बहुत सुंदर भजन गाया है, उसमें एक वाक्य बहुत सुंदर लगते गुजराती में, हरि नो मारा छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे। ये कायरों का काम नहीं है, यहाँ पे सिर झुकाना पड़ेगा, और झुका दोगे। प्रभु जी एक चीज है, अगर आपको लगेगा कि अरे प्रभु इतना हैवी मत बोलो, इतना हमको इतना टाइम लगेगा, ये प्रभु जी इट इज पॉसिबल, आप झुका सकते हो जब आपको लाइफ की रियलिटी समझ में आएगी। अगर व्यक्ति की लाइफ के अंदर रियलिटी समझ में आ जाएगी तो समझ जाए तो ऑटोमेटिक आप झुका दोगे। कैसे आपको समझ में? यहां पे कौन आदमी कह सकता है मैं खुश हूं? एक आदमी हाथ ऊंचा करके बताओ, एक आदमी बताओ। आपने जो प्लान किया सब प्लान बराबर हुआ है, सब एकदम परफेक्ट जा रहा है, सब लाइफ के अंदर ब्लिसफुलनेस है, आपको इधर ही रहने का है, यहां पे कोई तकलीफ नहीं है, आपको बस ऐसी जिंदगी निकालना। कौन बोलता है इधर? कोई है क्या? ये क्या दिखा रहा है? हम इधर रगड़ रहे हैं प्रभु, और इधर रगड़ने के बाद में भी क्या हुआ है मालूम है? हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है? रगड़ने के बाद में भी क्यों कृष्ण भक्ति में नहीं आते? क्योंकि हमको अभी भी आता है हो गए कामयाब, एक दिन तो मुझे मिलने वाला है सब चीजें। अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम सबका होता है, सब प्रॉब्लम तभी तो उसका रिजल्ट आएगा, तब उसका मजा आएगी ना। प्रॉब्लम नहीं आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा तो मजा नहीं आएगा। वही आशा में आशा में आशा में जिंदगी चलती रहती है, और जब भी वो जिंदगी चलती रहती है फिर बाद में जो मृत्यु के वक्त पे जो है ना प्रभु सब चीज हमारे पास से छीन लिया जाता है, तो तभी तो यार पाया क्या है, सब बैलेंस शीट तो निकला ही ऐसा ही गया। तो माया आपको क्या बोलती है? बराबर है, मैंने तुमको बोला भी था कि तुमको मैं खुश करने वाली हूँ, लेकिन ये सब चीज थोड़ी प्रॉब्लम में आ गई। अगर ये नहीं होता था तो तुमको पक्का मिलता था, चिंता मत कर, अगले जन्म में पक्का, अगले जन्म में पक्का। और हम इतने अटैच्ड है प्रभु ये दुनिया से, क्योंकि अभी भी अंदर मजा करने की इच्छा है ना, घुट के मजा करने की इच्छा है ना, तो वो घुट के जो मजा करने की इच्छा है ना, इसलिए हम वापस वो माया के ट्रैप में, यस माया में आता हूँ, चलो वापस दूसरे जन्म में
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटनेश्वरम। इसलिए एक सिंसियर डिवोटी होता है ना, जिसके अंदर एक ज्वाला आ जाती है ना, उसके अंदर एक अंदर से विश्वास आता है, बस बहुत हो गया, दिस इज टू मच, कितना मार खाऊंगा, कितना मार खाऊंगा, हद हो गया यार, एक के बाद मार ही देते रहते। कौन कहता है यहाँ पे पीट नहीं रहा है, सब लोग कितने पीटते हैं प्रभु जी, हमको कितना पीटाई जा रही है। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है भाई, लड़ाई अंदर है। ये अंदर की लड़ाई जीतना ही बड़ा भयानक है, वो अंदर की लड़ाई जीतने में तकलीफ होती है। कितने पीटते हैं प्रभु जी, फैमिली प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम, और कोई तो सोशल लाइफ का प्रॉब्लम, सोसाइटी का प्रॉब्लम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना अनर्थ का प्रॉब्लम। ये सब होने के बाद में भी हम लोग खुश है, खुश है, खुश है। मूर्ख छिया में हम मूर्ख है प्रभु। क्यों मूर्ख है? क्योंकि जो है ये सब देखने के बाद में भी तुमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मजा आया। दिस इटसेल्फ मेक्स इट वेरी क्लियर प्रभु, हमारा अटैचमेंट ही हमको पकड़ करके रखता है इधर। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। अभी भी अंदर से ऐसा लग रहा है ना, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं खुश होगा। लेकिन एक व्यवस्थित व्यक्ति को समझ में आ जाता है ना, उसको बस दैट्स इट, आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट नाउ, दिस इज टू मच, मार खा लिया मैंने। क्या दुनिया है प्रभु जी, थोड़ा विचार करो कैसी दुनिया बनाई है, थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कितनी रियलिटी है लाइफ के अंदर। हस्बैंड एंड वाइफ, चलो ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर हाउस होल्डर्स एक्सेप्ट वन, हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते हैं, करेक्ट, 30 साल 40 साल साथ में रहते हैं, 50 साल साथ में रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे से इतना अटैच्ड है। एक दूसरे से इतना अटैच होने के बाद में दो में से एक आदमी चला जाता है, दोनों एक साथ में तो नहीं जाते हैं, ये दो में से एक आदमी जाता है। अभी वो जो दो में से एक आदमी जब चला जाता है, वो किधर गया पता नहीं है, क्या करना है पता नहीं है, किधर है पता नहीं है, क्या होता है पता नहीं है, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं पता नहीं है। वो इधर, उसको भी मिलने को आने का है, आ नहीं सकता है, तुमको भी उसको मिलना है, नहीं मिल सकते हो। क्या दुनिया की रियलिटी है यार। और कौन कह सकता है कि मेरे जीवन में नहीं होने वाला है? क्या लाइफ की रियलिटी है ना। अपन तो प्रैक्टिकल आदमी है यार, बिजनेस किया हुआ है, हम तो ये देखते हैं यार, ये तो चला जाने वाला है। और वो आदमी भी जो है ना पहले रोता है। अभी समझो पत्नी चली गई तो हस्बैंड जिधर रोएगा, लेकिन उसको भी दुनिया में ऐसा माया मारती है ना कि 2-3 साल वो रोएगा, चौथे साल में उसको याद करना पड़ेगा, ए तेरी पत्नी की डेथ एनिवर्सरी है यार, तू भूल गया। चौथे साल में ही भूल जाता है। जो पत्नी ने 50 साल उसके लिए दिया है, वो चौथे साल में ही भूल जाता है। अरे इतनी चिचड़ी दुनिया है, उसके अंदर हृदय देने जैसा है क्या? ये साचू लागत के नहीं लागतो, ये सु लाइफ की रियलिटी है यार, और इधर होने के जैसा है क्या? सब चीज चला जाता है यार। मैं तो हमेशा मैंने एक बार राधा रत्न को माना, दिस इज टू मच, कृष्ण बहुत क्रूर है। तो क्यों क्रूर है? तो इतना पैसा कमाया, इतना गधे के जैसा काम किया, और सब छोड़ करके जाने का 10% तो दे देना मेरे को। अरे 10% दे देना तो मेरी लाइफ उधर से तो बराबर सीधे सिस्टमेटिक चालू तो हो जाएगी। 10% लेके जाने दो, जब 90% तुम लेके जाओ भाई, जाने दो भाई, अभी पनिशमेंट देने का तो, लेकिन 10% तो इतनी मेहनत किया, 0 में 0 निकल जाओ, गेट आउट। प्रभु ये समझना, मृत्यु बहुत भयानक है, बहुत भयानक है ये प्रभु। एक जो मोबाइल होता है ना, ये स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन घूम जाता है ना प्रभु, या टूट जाता है तो 3 दिन रात को नींद नहीं आती है। मानते हो कि नहीं? आती है क्या नींद? 3 दिन रात को नींद नहीं आती है, एक स्मार्टफोन जाता है तो। बराबर है। 60-70 साल 80 साल की मेहनत किया हुआ चीज आधी सेकंड में आपके पास से खींच लिया जाता है और आपको फेंक दिया जाता है, और आपको कहाँ जाते हो आपको मालूम नहीं है। जिधर भी जाते हो तो 0 से लाइफ चालू करना पड़ता है, और फिर भी आप आस्ते आस्ते जाने वाले हो क्या? सो प्रैक्टिकल इट इज, एंड सो लॉजिकल ऑल्सो इट इज। व्हेन यू सी ऑल दिस थिंग्स, एक पर्सन को अंदर से उत्कंठा आना चाहिए, नो दिस इज टू मच यार, दिस इज टू मच, आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, दिस इज टू मच। ये बहुत मार खा लिया मैंने, मुझे अभी इस पर सीरियस सॉल्यूशन चाहिए। जब ये उत्कंठा आएगी ना प्रभु, तब व्यक्ति कुछ भी करेगा।
जब व्यक्ति को, आपको मालूम है वो 12th स्टैंडर्ड में जो है ना बच्चा होता है ना प्रभु, उसको मालूम है कि अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। उसको दिन रात मालूम नहीं होता है, उसने खाया कि नहीं खाया मालूम नहीं होता, वो सोया कि नहीं सोया उसको मालूम नहीं होता, कुछ भी उसको मालूम नहीं होता। उसको खाली एक ही टारगेट होता है, आईआईटी मेडिकल, आईआईटी मेडिकल। प्रभु वी ऑल्सो हैव टू हैव वन थिंग, किसी माँ के पेट में अभी जाना ही नहीं है मुझे, मैंने बहुत मार खा लिया अभी। I want Krishna now, अभी बस बहुत हो गया मेरे लाइफ में। And that is only possible when you have a taste in chanting the holy name। कितना सिंपल है प्रभु जी, क्या है प्रभु जी। I take my words up प्रभु जी, I have seen so many devotees in my Zoom, I'm seeing it। ऐसे ऐसे devotees ने क्या लाइफ चेंज हो गई है प्रभु। आई थिंक कितने साल हो गए अपना जूम को, 2 साल, पौने 2 साल में आई हैव सीन डिवोटीज, पौने 2 साल में ऐसे डिवोटीज है जिन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया, एक दिन भी मिस नहीं। और इरिस्पेक्टिव प्रभु जी, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, हाउस होल्डर है, सबने ऐसा कर सबका स्मूथ नहीं चलता है, पर क्या कमिटमेंट। ट्रेन में होते तो ट्रेन में भी जूम चालू कर देते, बस में होते तो बस में भी कर लेते। दे डोंट वांट टू लीव द कनेक्शन। क्यों? अक्कल आ गई, समझ में आ गया हम कैसी स्थिति में फंसे गए हैं, हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। सो प्रभु सिद्ध बकुल is our heart, is our heart of our God here, is giving so much nourishment for our Krishna consciousness। प्रभु एक चीज मेरा एकदम क्लियर है, जो व्यक्ति को हरि नाम का टेस्ट आ गया उसकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ही स्टेबल हो जाती है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस, उसकी लाइफ बहुत स्टेबल रहती है। अप्स एंड डाउन आता है, थोड़ा हिलता है लेकिन अपरूट नहीं हो जाता है। आपको मालूम है जब आंधी आती है तो झाड़ हिलता है, लेकिन जो है वो जिसका रूट बहुत स्ट्रांग होता है ना वो गिरता नहीं। उसी हिसाब से जिसको हरि नाम का टेस्ट आ गया उसकी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है, हिलेगा लेकिन भागेगा नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस से चला नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट। हम जगन्नाथपुरी में आए हैं, वी वांटेड टू हैव दैट। मेरे को कृष्णा चाहिए अभी, मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाना, ये सब देखना नहीं है अभी। प्रभु जी आई एम वेरी फ्रैंक प्रभु, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, मुझे जो है लगभग में प्रहलाद महाराज या वासुदेव दत्त के जैसा नहीं हो, इधर आके जाओ, मैं लोगों की सेवा करके जाओ, मैं सबकी सब भगवत धाम जाएगा तभी मैं जाऊंगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है भाई। ये जन्म में जितना हो सके उतना करना चाहता हूँ। मेरे को डर लगता है अगले जन्म में मैं दूसरे को सुधारने में मैं बिगड़ ना जाऊँ। माँ मुसीबत से इतना सुंदर भक्तों का संग मिला है, संतों का संग मिला है, इतना सुंदर गुरु महाराज मिले हैं, इतना सुंदर भक्तों का संग मिल करके भाई जितना हो सके सेवा करके अपन को तो निकलना है इधर से, इधर खड़ा नहीं रहना है। और मालूम है वो कबड्डी खेलते ना, कबड्डी मालूम है ना, कबड्डी गेम, कबड्डी में जो है ना प्रभुपाद जैसे जो बहुत स्ट्रांग होते हैं वो एकदम अंदर चले जाते हैं, बराबर है, एकदम अंदर चले जाते हैं और अंदर से लेकर करके सबको खींच करके बाहर लेके आते हैं। अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है कबड्डी में, इतनी कैपेसिटी नहीं, तो एकदम बॉर्डर लाइन पे हुतू करके बाहर निकल ऐसा है भाई। थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकल जाते हो, जितना हो सके उतना करेंगे, क्योंकि आपका खुद का ही आपका ठिकाना नहीं है। दूसरों को क्या बता रहे भाई, इधर अनर्थ निकला नहीं है, अपना से स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतना टेस्ट आया नहीं है, इतना अनर्थ के साथ में फाइट मारता रहता है, और वो फाइट मारने के अंदर वो हम होता है मैं तो जन्मों जन्मांतर आने वाला हूँ। अरे भाई मेरा तो नहीं है भाई, आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल, आपने को नहीं समझ रहा है इतना, इधर से निकलना है। तो प्रभु विल गो ऑन हैविंग ए टॉक, प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे टेस्ट मिल जाए ऐसा हरि नाम का। मेरे को एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा, व्हाट इज द बैरोमीटर महाराज दैट आई हैव गॉट ए टेस्ट इन चांटिंग दोगे, कुछ हम बैरोमीटर, गाँव का सर्टिफिकेट छोड़ो महाराज, मेरे को चेक करना है कि मुझे हरि नाम का टेस्ट आ गया कि। बहुत चीज भारत ने बताया, लेकिन एक चीज बताया उन्होंने, बहुत स्पेसिफिक चीज बताया। उन्होंने मुझे बताया कि हरि नाम का टेस्ट अगर तुमको आ गया ना तो बैरोमीटर ये है कि तुम हरि नाम को याद नहीं करते, लेकिन हरि नाम तुमको याद कर लेता है। तुम जैसा फ्री होते थे ऐसे हरि नाम चालू हो जाता है। That itself makes it very clear. Krishna has become so happy with you and pleased with you. He just see to it that he doesn't want you to forget him. If you get that stage, understand you have got a taste in chanting the Holy Name. फिर बाद में मैंने पूछा महाराज वो अगर आया तो नहीं है, लेकिन अगर आ भी गया कभी तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करने का है? तो बढ़िया है ना प्रभु, धंधा में कमाई हुई तो कमाई जानी नहीं चाहिए तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। So then Maharaj told me very nicely, see to it that
You maintain the same enthusiasm to chant the holy name and don't do any Vaishnava aparadh, because Krishna becomes very disturbed when he sees that devotees are offended because of you. If you maintain very, very serious chanting and don't do aparadh and always keep your standard of humility very seriously, everything will be on track. एक चीज समझ लेना प्रभु, वी आर नॉट लाइक आई एम नॉट इंटेलिजेंट लाइक व्रज बिहारी प्रभु, कितना श्लोक आता है ये मेरे को तो कुछ समझता ही नहीं है यार. मेरे को एक बार मैंने मारा मेरे को एक श्लोक याद नहीं रहता, क्योंकि हरे कृष्ण आता है ना तो वहाँ वही आता है, लेकिन बस सफिशिएंट है तेरे लिए. बट प्रभु वन थिंग दैट हैपेंस, आई हैव सीन इट. अगर आपको कोई श्लोक का, आपको फिलॉसफी, आपको बहुत सब चीजें मालूम भी नहीं होती है, बट एक व्यक्ति, जो व्यक्ति को हरि नाम का टेस्ट आता है ना प्रभु, जो जरूरी है ना, कृष्णा अंदर से रिवील करके आपको कॉन्सियसनेस एकदम पक्का करवा देता है. कृष्णा हेल्प्स यू आउट. Finally, why we wanted to know all these philosophies? To make our consciousness fixed up in devotional life. Krishna makes it that. This is only by the potency of the holy name. Prabhu, extremely sorry. बोलने लगा तो बोलने लगा. I will end it right now. I'm sorry, Prabhu. The last part you want me to speak? The last part I can. Essence of Jagannath Puri Siddha होली नहीं, और आप हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है होली, और आप इधर आए इधर कभी ऐसा समझो. प्रभु मुझे आपको मेरी गरज नहीं, मुझे आपकी गरज है प्रभु. अभी 60 साल हो गया, कितने साल और जीने वाला. आई वांट कृष्णा प्रभु. सो द लास्ट पॉइंट विद प्रभु जी सेइंग क्या होना चाहिए. अभी मैंने एक बार राधानाथ महाराज को पूछा था कि महाराज कैसे मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने मेरा जिंदगी की लाइफ की स्पिरिचुअल लाइफ परफेक्शन कर लिया है, कि मेरे को सब बराबर ठीक ठाक हो गया, मैंने मेरी जिंदगी बिगाड़ी नहीं है. बाहर का सर्टिफिकेट नहीं, मेरे को खुद को चेक करना है. हाउ कैन आई चेक माई सेल्फ? मैंने जो है जिंदगी बिगाड़ी नहीं है. कुछ बैरोमीटर मुझे दिखाओ जिससे वो चेक करूं, और वो चेक करने के बाद में मुझे लगे कि नहीं ठीक है, बिगड़ा नहीं है लाइफ. ठीक है, शुरुआत में गड़बड़ किया था, लेकिन बाद में कवर अप कर लिया. वो 50 ओवर्स गेम होती ना, 20 ओवर निकल गया तो 30 ओवर में बराबर ज्यादा मेहनत करते और कवर कर लेते ऐसा. ठीक है, वो कर लिया. महाराज तो बहुत सुंदर जवाब दिया. लास्ट में प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी महाराज बता रहे थे कि everybody has to leave the body, nobody is an exception, nobody is an exception. And people don't speak, that's a different case, but everybody is afraid of death. सब बातें करते हैं प्रभु, सब मरने के लिए डरते हैं. महाराज मेरे को बता रहे थे, when you really advancing in Krishna consciousness, the barometer is the fear of death comes down. मृत्यु का भय, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा निकल गए, लेकिन पहले तो घबरा जाते थे. इतना घबरने की जरूरत नहीं है यार, कृष्ण की कृपा आएगी ऐसा लग रहा है. कृष्ण की कृपा आएगी, इतना खराब नहीं हुआ है. That fear comes down, and the perfection of your Krishna consciousness in this lifetime is when you get the notice of death, and when you have been told that now you will be able to survive only a month or 2 or something. Instead of becoming afraid or fearful, you become happy from within. You feel Krishna is giving an indication that now your lesson is over, your test is over, your exam is over. Now after about 2 months, I am going to open the door of Golok Vrindavan, and then in Golok Vrindavan, both of them will be coming together, and then we'll be having an eternal life. These thoughts will come. And then a thought will come in your life is, this 2 months is a very long time. This is too much long time. When the 2 months can become short and I can be with Krishna as quick as it can. This is the perfection of Krishna consciousness. And this chanting can take us to that level. हमको चाहिए कि नहीं चाहिए यार? क्या चाहिए कि नहीं? क्या इधर रगड़ने का है यार? क्या रगड़ रहा है? हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल हमको ये दे रहा है. जगन्नाथपुरी आए, मेरे लिए यही है प्रभु जी. सिद्ध बकुल जाओ, हरि नाम लो. हरिदास ठाकुर को मेरे को टेस्ट दे दो यार. अभी बहुत मार खा लिया, बहुत किक खा लिया, बहुत पीटा है मेरे को. सब लोगों ने पीटा है और अभी भी पीटते जा रहा है.
अभी बहुत हो गया, अभी इसका सोल्यूशन चाहिए. दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. प्रभु जी प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करना. बातें करने में बलिया का बच्चा हो ना, बनिया वाला लोग बातें करने में बहुत होशियार होता है. प्रभु लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं ठिकाने रहूं और मुझे वो टेस्ट आ जाए हरिनाम का, जिससे स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्टेबल हो जाए. रजबिहारी प्रभु, विल यू प्रे फॉर मी? नो, आई एम सो मच डिपेंडेबल ऑन हिम. I can tell you very frankly, he's a very close friend of mine. भले वो ब्रह्मचारी है, मैं हाउस होल्डर हूँ, गृह में भी हूँ, लेकिन he takes care of me, he protects me. So I go along very nicely. तो वो जलता, उनका लाइफस्टाइल मेरा लाइफस्टाइल अलग है ना, लेकिन he takes care of me. So very grateful to him. So I think we'll end it now. वंश कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुमहे वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव.